Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the quarantine series. I hope you're doing well. The news around is not good. इर्द गिर्द से खबरें अच्छी नहीं आ रही. कॉन्स्पिरेसीज अपनी जगह पे. हम पहले सुन रहे थे कि दूर के लोगों को कोरोना है, जो बाहर से आ रहे हैं वो सफर कर रहे हैं, और अब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं रोजाना. खबरें अच्छी नहीं है. दुआएं जारी रखें, एहतियात जारी रखें, और इस वक्त को पॉजिटिव बनाएं अपने लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए. ये वक्त अना का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे को गिराने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे को सपोर्ट करने का है. हम सब इस बात को रियलाइज करते हैं, पूरी दुनिया, तमाम लोग इस बात को रियलाइज करते हैं. और आपका मेरा छोटा कदम, आपका मेरा किसी को सपोर्ट करना, चीयर ऑन करना, उम्मीद दिलाना, उनकी बात सुनना, उनको बहुत आगे तक ले जा सकता है. आज का मौजू बहुत अहम मौजू है. मैंने अपने खानदान में 3 लोगों को कैंसर से लड़ते हुए देखा और जाते हुए देखा. और ये सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल है, फैमिली के लिए एक इम्तिहान है, उस शख्स के लिए एक बहुत ही सख्त इम्तिहान है. और अगर वो शख्स प्रोडक्टिव हो, अगर वो शख्स चलने फिरने वाला हो और अपने हर लम्हे को जीने वाला हो, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने वाला हो, तो शायद ये मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाती है. नादिया कामरान को मैं काम के हवाले से पहले जानता हूँ, और बहुत खूबसूरत काम के हवाले से. वो लोग जो सिंसियरली बड़े बड़े अज़्म लेके चलते हैं और अपने नाम से बढ़ के उन प्रोग्राम्स, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में लगे रहते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं. उसकी लेजिस्लेशन पे उसको पूरे मुल्क के लेवल पे मुमकिन बनाना, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों के साथ कोलैबोरेशन करके उसको मुमकिन बनाना. नादिया कमरान ये सब करती रही, बहुत खूबसूरत फैमिली लीड करती रही, until something happened, and that is what we're going to talk about today. ये प्रोग्राम नादिया के करियर के बारे में नहीं है, हालांकि एज अ प्रोफेशनल आई एम फैन ऑफ व्हाट शी डज, how she thinks and how she makes things happen. But today we're going to talk about cancer, something that she hit. किसी को बता के नहीं आती ये बीमारी, और पाकिस्तान में आगाही जिस तरह बाकी चीज़ों की कम है, यकीनन इसकी भी कम है. आगाही सिर्फ ये नहीं कि ये कैंसर आपको हो सकता है, बल्कि आगाही ये भी कि जब हो तो उसके बाद आपने क्या करना है. अगर आपके इर्द गिर्द किसी को हो तो आपने क्या करना है, किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है. आप सबका साथ रहेगा. जॉइन इन टू सपोर्ट नादिया कमरान, जॉइन इन टू सपोर्ट ऑल द कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर फाइटर्स. Tag your friends, family, those who can gain inspiration from this Wonder Woman called Nadia Kamran. Thank you, Nadia Kamran, Nadia Appa, for being on the show. Assalamu alaikum. Thank you, Umair, for having me. It's wonderful to see you. हमने reschedule किया आपके साथ. कल ये शो होना था, हम आज कर रहे हैं because Nadia Appa she was just not feeling up for this, and that's what life seems like. We're going to talk about that. Please ask your questions in comments. You can join us live towards the end. Nadia Appa, how are you doing right now, and how is this quarantine time for you? It's what can I say? Stressful because you're staying home and watching all that news that comes in, and now dekh rahe hain, there are a lot of people around us that are being affected. So it's pretty stressful, but altogether, I think I'm still working from home, and I'm cooking for the kids, and I'm just trying to make the most of it. So it is stressful, I must say that. Yes, indeed it is. Indeed it is. कल मुझे नादिया अपन ने बताया कि throughout the struggle, the time, खाना बच्चों को जरूर घर का खिलाया और काम जारी रखा, और मुसलसल काम जारी रखा. इसीलिए when I was writing caption for this, I put up 3 words together: positivity, productivity. Positivity भी चाहिए, लेकिन productive होना उस positivity के साथ. She's been doing that. So wonderful. Let's get sailing, Nadia Appa. You have a long journey story to talk about. You also put it out recently. Very brave of you. We've all around you, people who have known you, seen you change. You're very brave, and thank you for agreeing to share your story today. तो मैं जहाँ You, insensitive हूँ, आप प्लीज मुझे मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, हम सबकी इस्लाह कर दीजिएगा, because you're the one who is fighting and we're the one who commenting, listening, trying to seek inspiration, and we may not know the other of it. thank you, Umair. Thanks for being so considerate. Okay, so I would like you to just quickly tell us a little bit about yourself, your family, so that we can have some context. So I am a mother of two beautiful young kids. My son is 22 and my daughter is just turned 18.
And by profession, I've been working on project management basically. Implementing projects, design is my forte. I love it. Basically, designing a project, conceiving the idea, taking to that level where you implement it, and then seeing the impact. That's what really I'm very fond of. I worked on a number of projects in the development sector, starting from global education, bringing it to Pakistani schools, and then also some arts projects, language projects, but mainly in education. So education is basically my area of expertise. I'm very Wonderful. passionate about sort of school education, higher education, both, and then international education. So yes, sab kuch, and then Umair, like online nowadays during quarantine, there are a lot of programs, that virtual programming for Hmm. education. So that, Yeah. so that's my background, and also a little bit of training, Yes. educational A training lot at of it. yes. So yeah, that's a little about me. Beautiful. Thank you. So you were doing all of this, making projects, making them happen, a lot of learning, education there. What happened then? Tell us about the diagnosis. What was it, and what had you developed? So और in अगर नादिया आपा 2015, कैन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर हम अंग्रेजी उर्दू मिला के बात कर ले तो हम ज्यादा लोगों को एंगेज कर सकें. एब्सोल्युटली, मैं 2015 में आई वाज ट्रैवलिंग फॉर वर्क, और ऐसा था कि उससे पहले 1-2 महीना मेरी एनर्जी लो हो रही थी, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर सेइंग कि तुम ग्रे लग रही हो, तुम फटीग है, स्टॉप, टेक चिल पिल, थोड़ा रिलैक्स कर लो, क्योंकि मैं, एंड देन बिकॉज आई वाज फीलिंग द एनर्जी गो डाउन, I changed my diet. I started exercising. I started going on to greens, and I was very हम्म. conscious of कि मेरा lifestyle ठीक नहीं है. वो सारा कुछ करती रही. Long working hours भी थे. लेकिन उसके बाद 2015 में, when I was traveling, I was abroad with some education sort of people, a delegation, and all of a sudden my right arm started to swell. So in a conversation with my husband from there, I was like, I was alarmed, and I said, oh, मुझे ना मेरी बाजू सूज रही है, मेरे बाजू में swelling हो रही है, पता नहीं क्या बात है. So he said, maybe you've had something to eat that didn't really suit you, or you're having an allergic reaction. हम्म. लेकिन वो, it didn't go away, and I was so exhausted throughout the day. One colleague of mine, an ex-colleague, came to visit me. I was in the States, and while she was talking to me, I dozed off, and she left a note for me saying, "I'm sorry, you fell asleep. I didn't want to wake you up. I mean, this is 7 ओह. p.m." And then उनको she लगा just आप left the थक के note, सो and I गई was हैं, like, यू आर एग्जॉस्टेड. मैं एम्बेरस हो गई. मैंने कहा 7 बजे मैं डोज ऑफ करके बातें करते हुए, दैट्स सो नॉट मी. तो ये या. होता गया, बट व्हेन आई केम बैक, इट started getting more painful. A doctor friend of mine said I should get it checked. I went, I got it checked. The doctor who saw it straight away told me it was cancer without any tests. She says, I am sure of it. I'm just going to verify through tests. So वो बड़ा Oh. shocking था मेरे And how लिए. co- And I how was, could she just tell by listening to what you were going go through? for an. She basically told me that I'm telling you this is cancer, and you have to get all these things, the reports done within a week, because I don't want further delays. This seems like an aggressive cancer. और वो कह रही थी कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको लाइट ना लें, आप जल्दी जल्दी टेस्ट करा के मेरे पास वापस आएं. सो उस वक्त तक भी मुझे उम्मीद थी कि शायद वो गलत हो. माय हस्बैंड सेड, शी इज अ वेरी यंग कॉम्पिटेंट डॉक्टर, बट माय हस्बैंड, बिकॉज वी वर इन अ डिनाइल फेज, तो वो बोल रहे Yeah. थे कि नहीं, ये बहुत यंग डॉक्टर है, ऐसे ही कह दिया इसने, ऐसे ही कुछ नहीं है. The tests came in, Pfizer, and I was done. And within like 2 weeks I started.
Nadia, So are you uske there? baad Umair, I went जी. through the whole. Sorry, did you say थोड़ा something? सा आपका कनेक्शन लैग कर रहा है आई थिंक, बट एनीवे आप बस मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि अपनी कहानी उर्दू में भी थोड़ी सी मिला के शामिल करें. अच्छा, can you hear me properly? यस यस आई कैन. लैग है लेकिन आप चले, वी कैन हियर फाइन. हाँ जी लैग है थोड़ा सा. अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि जब डायग्नोज हो गया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जो भी लोग इस चीज़ से गुजरते हैं, इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू अब्सॉर्ब द फैक्ट दैट यू हैव कैंसर. It's stressful. It's I don't know. We were all so stressed all the time. My husband, I had so many. At that point in time, so, oh my God, what's going to happen? Kids, my one whole my son thought, oh my God. So then started to kick it off with what is who's there here, it's all about. There's a lot besides painful, it's stressful, it's emotionally, financially challenging. So all of that, and Umair, can you hear me? यस आई कैन. बस मैं थोड़ा, मेरा आपको एक्सप्रेशन देर से मिलता है क्योंकि लैग है. But I have an idea. Just if you can request somebody around you to also log into your laptop and have StreamYard on both your phone and laptop. So I'll take the video from there and audio from this. Do something mix and match. So वो alongside अगर हो जाए. So I understand. You know, you were telling that it's very stressful coming to terms with it. Accept करना, फैमिली के लिए टोल है, फाइनेंशियल टोल है, इमोशनल है. And of course, we like to know, okay, how did you cope with it? How did you stay positive? How did you stay productive during this time as well? So I'd like to know that. But some love for you on the comments. Samuel says you look great. Farhad is saying stay strong. Garib says salam. और बुशरा रिक्वेस्ट करिए कि अगर हम उर्दू में बात करें. जी बुशरा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं. Okay, so let's come to जी this. जी How did बिल्कुल. your life हाँ change? जी, उसमें बात करते हैं. How did your life change? And tell us about the line of treatment thereon. अब आपको पता चला stressful है, coming So to terms with it, but जिंदगी कैसे तब्दील हुई? जिंदगी तो बहुत चेंज हो गई. प्रायोरिटीज सब चेंज हो गई. सबसे पहली बात, प्रायोरिटीज चेंज हो गई. स्टार्टेड थिंकिंग, रियली टेकिंग लाइफ एज अ ब्लेसिंग. आप कभी सोचते नहीं है कि आपकी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड वी आर रनिंग अराउंड आफ्टर डिफरेंट थिंग्स. सो ये तो है ही. उस वक्त मुझे अपने इर्द गिर्द लकी that people around me, they just came together. They were bringing food for me when I went through my surgery. They were my surgery thing. They're praying for me. I had a lot of support from friends, family. Um, my important, really taking care of me, helping with the kitchen stuff. Okay, we are with Nadia Kamran. हम बात कर रहे हैं उनकी कैंसर स्टोरी पे. How did she fight? How has she stayed positive, productive? और कुछ बातें उन्होंने हाईलाइट की हैं. सॉरी, हम थोड़ा सा फेस कर रही है इशू. कल भी हमारा फॉर सम रीजन ब्राउजर पे ये StreamYard कभी कभी चैलेंज देता है. So we'll try to get her back. Meanwhile, do participate, comments, questions, because we'll have her back and she'll also answer your questions. अभी तक जो हमने सुना है उसमें, oh wait a second, she's calling, so
Okay, so just give us a minute. She's going to be here. Show your love, support for Nadia and for millions who are fighting cancer at this point. Nobody knows when it hits. जब पता चलता है तब बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है, जैसे कि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, फाइनेंशियली बहुत बहुत वेल टू डू लोग, वेल टू डू फैमिलीज जो है वो बिकॉज ऑफ नो सेफ्टी नेट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ cancer treatments available, access, and also the cost of it is very, very hard, harsh on families. हम try करते हैं नादिया वापस से. नादिया, can you hear me now? I can hear you, yes. ठीक है, अगर आप चाहें तो बस स्टॉप कैम पे क्लिक कर दें तो आपकी आवाज सही आ जाएगी. छोड़ें वीडियो को. Okay. ओके, इफ यू फील लाइक इट जस्ट स्टॉप कैम. ओके, ताकि आपकी आवाज कम से कम सही आ जाए. बाकी सारे लोग जो साथ हैं, आप आवाज कम से कम हम स्टोरी सही सुन लें. एंड मीनवाइल शी इज आल्सो गोना प्लग इन हर लैपटॉप. चले. So how did your life change and about the line of treatment? I understand health priority ban gayi ekdam se, and what after that and the line of treatment? So I was told, first of all, I must say that life insurance वगैरह, health insurance पे हमारे यहाँ इतना रवाज नहीं है. तो life cancer treatment is very expensive, very painful as well. बहुत सारी ट्रीटमेंट चल रही थी. आपको पता है when you're working, you get some time off. तो वो मैं काम करती रही. काम करना बहुत ज़रूरी है, मेरा एक्सपीरियंस ये है. I think it keeps you productive, it keeps you going. You meet colleagues, you're out of the atmosphere of, sometimes, you just, it's the same thing, medicine, and you go Yeah. out, you start doing something useful. It takes your mind off. आपका दिमाग बिल्कुल ट्रीटमेंट में जाता है आपको. तो मैं जरूर कहूंगी कि काम जरूर करना चाहिए. मेरा ये फील हो काम रहा है. जरूर तो करें, लेकिन काम ये आपको है कि प्रोडक्टिव ट्रीटमेंट रखता है, बहुत टफ माहौल थी. चेंज और करता है. उसमें कीमो के साथ रेडिएशन थी, रेडिएशन के साथ सर्जरी थी. Can you still hear me? Oh. No, I'm so sorry, Nadia. I'd request you to stop. Let's fix this. Let's fix this first. It's okay. We can do this again if it doesn't work out right now. But let's pause for a sec. Can I request you कि आप अपने phone से Wi-Fi off कर दें and जी try connecting with the 4G directly. Sometimes 4G is better than the Wi-Fi. Thank you guys for your patience. We're trying to fix it and hopefully you'll be able to. Otherwise, हम इसको अभी इसी वक्त जो है हम इस वक्त इसको रोक देंगे episode को, and then we'll carry on at a time that we can listen to Nadia well. But let's just try it for one last time. Okay, are you on 4G now? जी. Okay, good. I think this Yes, looks I am better. on I get. Okay, 4G. wonderful. ठीक है. So I understand कि काम करते रहे. So काम आपको productive रखता है. आपकी gatherings रहती हैं. आप सिर्फ उस lockdown में नहीं है, घर में नहीं है और treatment वाली जगहों पे नहीं है. But what is the line of treatment? You were talking about chemotherapy, and that's where we lost you. Thank you. Some great questions there. Yes, we will talk about what kept her going, strengths. Nadia बहुत अच्छी poetry भी करती हैं. वो भी हम towards the end सुनेंगे. I'm just hoping that this connection, we're able to get her back. Meanwhile, yes, and this is not just for Nadia. When we were having this conversation, this is for all the people who are fighting cancer, who have changed their lives, have been changed drastically, their priorities, and how they have to now rework a different lifestyle and not just make time for their own work, their own dreams and family, but also put up with this monster called cancer. So lots of love required. Nadia, can you hear me now? I can hear you. I don't know if you're getting my video, but I can at least hear you. And
I'd like to just. Can you hear me loud and clear? Yes, this is very good now. I think we have fixed it, at least for a bit. Okay, perfect. Perfect. Okay, yeah. So what, So tell us I about the don't. line of treatment, please. So the line of treatment there are a lot of there's obviously according to the type of cancer you have, the doctor suggests medication. काफी सारी दवाइयां बताते हैं. कीमो उसकी पहली एक sort of start off वो कीमो से करते हैं because वो चाहते हैं कि वो कैंसर को थोड़ा कंट्रोल करें. और वो काफ़ी एग्रेसिव होती है, तबीयत बहुत ख़राब होती है उससे फर्स्ट वीक इन स्पेसिफिक एंड आफ्टरवर्ड्स एज वेल. सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, इमोशनल फिजिकली आप ड्रेन्ड होते हैं. हाउ आई मैनेज्ड इज दैट आई यूज्ड टू टेक फर्स्ट 10 days off and then go क्योंकि वो 21 days का साइकिल होता है. यू गेट कीमो आफ्टर every 21 days. सो बाकी दिन 10 दिन मैं काम पे जाती थी, 10-15 दिन 10 दिन छुट्टी की पहले, और 2 weeks गए, फिर छुट्टी ले ली. तो इस तरह से मैं काम करती रही. और आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, आई एम नॉट सेइंग इट एट ऑल. मैं ये भी कहना चाहूँगी कि while people are were really supported, I had friends, family, and a lot of people from all over the world, even people who have known and met like once or twice, were calling and offering help and praying and all of that. But it was still there were some people who would try to pull you down. So the doctor's suggestion was that stay away from anything that brings negativity, and I did follow that. दूर रहे उन So तमाम चीजों से जो कि uh, आपको नेगेटिव कर देती हैं, टॉक्सिक कर देती हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है. जी, जी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि हम मतलब रहते दूर ऐसी चीज़ों से, तो मैं अवॉइड करना चाह रही थी ये सब चीज़ें, हम्म. और मैंने कोशिश पूरी की कि मैं अपने आप को पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में रखूँ. ज़्यादा sort of I would say what kept me going is spiritually being strong, emotionally being strong, doing my best to be a good person. उमर कीमो के दौरान जो कुछ देर घर में थे, उसमें although I couldn't go all the time to the kitchen, but I would share recipes with my daughter who was younger then and was really worried, ताकि मैं वो कुछ कुछ बना सके. मेरे बच्चे को मैंने रेसिपीज दी, उन्होंने वो ट्राई करते रहे. आई वाज ट्राइंग टू help them learn how to cook. And uh, the other thing is that we didn't talk all about it all the time at home. हम घर में ज़्यादा गुफ्तगू इसके बारे में नहीं करते थे कि हर वक्त यही बातचीत करें. हम ज़्यादा कोशिश करते थे कि हम पॉजिटिव एंगल्स पे बातचीत कर सकें. So as one of my friend who came to my house said that I'm the first time I was diagnosed, she said that मुझे लगा नहीं कि मैं किसी कैंसर पेशेंट. It's normal, it's positive, it's cheerful. Wow. Wow, more power to you, more power to you. Lots of love for you. And people are saying the same, that you positive. And G, you were saying something. जी. So उमर एक चीज. Yes, one thing I was home and I've been writing. I've always been. I used to write poetry, and I already had some published books. There was this one particular book जो कि मैं हमेशा काम पे बिजी रहती थी, तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला कि मैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकूं. तो किसी कागज पे कुछ जगह वो एक जगह पे हमने कर लिया, और हम वी स्टार्टेड गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट मटेरियल. तो रियलाइजेशन Wow. ये हुई कि किताब बन सकती है. तो माय हस्बैंड रियली मी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग, और हमने एक उर्दू की किताब पे, जो मेरी शायरी की किताब थी, उस पे काम करना शुरू कर दिया. कुछ पीसेस शायरी की किताब ड्यूरिंग आई वाज गोइंग थ्रू कीमो एंड रेडिएशन ऑल ऑफ दैट. I, um, I started working with a publisher who would do Skype calls and मेरी किताब
कुछ चीज़ें Wow. वो एडजस्ट करती थी, लेकिन कुछ बस हमने तकरीबन 2.5 months 3 months में we got the material together और वो किताब हमने बनानी शुरू कर दी कुछ. So Wow. again I think that took my mind off a lot of the pain. और कुछ क्रिएटिव काम था तो मैं जरा बिजी हो गई तो अच्छा लगा मुझे. कुछ पीसेस उस किताब में मैंने कीमो के दौरान भी लिखे हैं उसके उस during that process. So Yeah. I that is another aspect of what I did. As I said, the journey is not easy. मैं बिल्कुल नहीं कह रही. Painful भी है, emotionally, financially. मैं आपको बताऊं, coming from a middle class family, it was very tough. हमारी जितनी सेविंग्स थी बच्चों की वो हमने यूज़ की ट्रीटमेंट में, जो उसके लिए मैं पहले एग्री नहीं कर रही थी. But obviously there was a lot of convincing by the friends कि नहीं, you're more important the doctor. और चूंकि कैंसर ट्रीटमेंट में आपको कभी गारंटी नहीं देते कि आप ठीक हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे. That is more stressful as well. It's not like you're taking medicine and they say कि by the way ये आप ले रहे हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. Yeah. ऐसा नहीं है. तो ये सारी चीजें मिला काफी it takes a toll on you. That's what I'm saying कि आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है. आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है. Nadia had to spend her family's savings अपने बच्चों के लिए जो सेव करते हैं माँ बाप. Being a middle class, anybody from middle class facing it will say the same. Imagine the class that is, even lower than the middle class. And what happens then? Families के अंदर ये discussions मैंने होते हुए सुने, treatment रोक दें, बचा लें जिसने जाना है. Not easy. लेकिन नादिया खुद कह रही है कि it's not easy, but it's not impossible either. There's some wonderful questions, and again, lots of love and support for you. One question which I want to ask as well: where do you feel people need to get educated? क्योंकि हम सब react करते हैं, support करते हैं, और at times support में भी हम support नहीं कर रहे होते और अपने reactions में हम ज़्यादा harm कर रहे होते हैं. So, what would you advise to people around you, and of course, from your own experience, what you saw, how people behaved with you? Majority of the people were very positive. They were very sensitive. They were considerate. There were a few people who would also come to me and say things like, "Ab thoda sa khuda ka khauf kar lo." Maybe I'm not religious, so maybe I don't pray enough, or maybe lifestyle change karo. Some of the people were constantly telling me how much weight I'm putting on, sort of how puffy I look. बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि एक I also, before I went through this treatment, they think that a cancer patient would be someone who had lost all their weight and they would be very weak. But that's not the scenario. आपको steroids मिलते हैं and you have this puffy look, you lose your hair and your eyebrows and all of that, and you just look different. And there were a lot of people who would highlight that for me. Some knowingly, some didn't know that I was going through treatment because I didn't want to talk to everyone all the time about it. So it was tough. I would say be a little more sensitive in terms of how you. I mean, looks are not that important. But, वैसे भी नहीं इतनी इम्पोर्टेंट. मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है अब कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें. लेकिन ये है कि जब इंसान एक क्रिटिकल के थ्रू जा रहा होता है, योर वर्ड्स रियली मैटर अ लॉट. तो पॉजिटिव रहना, बाज दफ़ा कहना शुक्र करो. Some people say that Yeah. a lot of people die in accident, that you have treatment and you can go through it. So that's not a very positive thing to say. Because living that of going through treatment, whether you not, is not an easy journey at all. Of So course. that's one of the things that I would like to say, that the words really matter. Some people have the right intentions, but because they don't really know better, तो फिर बाज Yeah. दफा वो अच्छे ही बात कर रहे होते हैं,
लेकिन अपने भलाई के लिए, लेकिन Yeah. वो अच्छा साउंड नहीं करता शायद, या महसूस नहीं बहुत अहम बात है कि अच्छी नीयत से बात की होती है लेकिन होता। अच्छा साउंड नहीं करता, सेंसिटिविटी नहीं होती। कोई शख्स जो कि बीमारी से लड़ रहा हो, उसके जिस्म में जो तब्दीलियां आ रही हो उसको हाईलाइट करते हुए सेंसिटिविटी, हर वक्त उस बीमारी के बारे में बात ना करने की सेंसिटिविटी, और कभी कभी सामने वाले को सिर्फ अपना दर्द बताने की और ना तंबी करना, ना एडवाइस करना कि शुक्र करो, होश पकड़ो, can be your contribution helping somebody who's going through such a tough time, making it easy for them. Thank you, Nadia. This is very, very enriching. I would like to know what's the you have mentioned that, but put this in a story. What's the toughest day like for a cancer patient? And in that, what kept you going? You talked about the spiritual link there, but help us understand this more. So, spirituality basically staying connected, believing, having faith when you pray to receive answers to your prayers. That's very important. It's a very personal thing. आपके लिए लोग दुआ करते हैं, बहुत सारी दुआएं आपको लगती हैं. It's very important. People were there, they were praying for me. लेकिन खुद के लिए दुआ करना and keeping going, believing the fact that you have an answer to your prayers, that's very important. For me, it's been very helpful. And then also, I would say that staying a little positive, it's not easy to stay positive, but I've tried to. एक चीज मैंने देखी है कि not all the time. So I'll give you a little example. During chemo, I was constantly in pain. They were very high sort of painkillers that they give you because you have pain. But I wouldn't talk about it to my husband all the time because I thought he'll get sick of me saying "मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है." So I would say, I would just manage it with the medicine. And when I was really really not being able to bear it, I would talk to him about it. So I eventually learned how to cope with it. क्या दवाई लेनी है, कितना बोलना है, कितना, because it's not you alone, it's your family, it's your friends, it's all of the people around you who are looking at you, and they're also pulled down. So it's just it's hard. And I think I've tried that. It worked for me. Umair, जहाँ तक आप बात कर रहे थे, I have had almost 2 years cancer free. So I went through treatment from 2015 December to February 2017, and surgeries, chemo, radiation, the whole lot. And after that, I was well. I was on medicine. They gave me like one medicine to take permanently. But I would say that I also was able to work. For once I had a scan. It came out clear, and I was very happy that I've defeated it. Really proud of myself. So after surgery, मेरी ज़्यादा swell हो गई थी. अब आपका कैमरा पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं. काम कर रहा है मुझे अब ये आवाज आ It's रही double है. the Go size on. to the other hand. So I have swelling in my hand is lymphedema because they take your lymph nodes out during surgery. So that's an additional permanent, Can you show I would your say hand again? disability or whatever that came with. So this is Can you see it? this yeah, yeah, It's yeah, of like, course I can. Hmm. so if I show you the other hand, you will be able to. It's different. It's Yeah. different size, and this is my. So it's called lymphedema, and I had to manage my work with it. Like I work for a little while, then you know, मैं इसको थोड़ा ऊंचा रखती हूँ ताकि स्वेलिंग नीचे चली जाए, दर्द कम हो जाए. इसकी कंप्रेशन स्लीव्स हैं. ये एक परमानेंट चीज़ है जो ट्रीटमेंट के बाद रही है मेरे साथ. और ये 2017 के बाद दोबारा जो है 2019 में लास्ट ईयर रीअकर कर गया कैंसर. और वो मेरे लिए काफ़ी ब्लो था बिकॉज मेरा ख्याल था कि अभी तो मैंने डिफीट कर लिया है, सब ठीक हो गया है.
और दोबारा रीकर किया। मैं तबीयत ख़राब हुई, वेंट फॉर अ चेकअप, वॉज ब्रेथलेस। डॉक्टर ने भी वो जो मेरे 6 वीकली चेकअप्स होता है राइट, शी सेड इफ यू हैव अ कॉम्प्लिकेशन डोंट कम टू मी, गो टू अ फिजिशियन. So that was another. It came back. It was, I would say, मैं उतनी ही disappointed थी जितनी पहली दफा थी. Although I knew how to cope with it, but it came back and it just broke me. I thought, oh my God, why? What am I going to do now? It's stage 4 now. I'm living with it. It's stage 4. The medicine that they gave me, because I'd spent, as I told you, come from a middle class family. We tried our best. A lot of family friends helped. In पहली दफा में हमने लोन्स लिए थे, and what पे ऑफ किए. दूसरी दफा जब reoccur हो गया तो we'd spent literally everything on the previous round. So I was like really stressed out, and then the doctor told me that the medical medicine that they're going to start is very expensive because it's not available in Pakistan. एंड वो मैं बताऊँ, इस पूरी जर्नी के साथ साथ जो फाइनेंशियल टोल है ना, कॉन्स्टेंटली वरिंग के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर भी चलाना है, सॉर्ट ऑफ जिंदगी भी गुजारनी है, और साथ में आपने ये दवाई के पैसे भी पूरे करें. दैट्स प्रीटी स्ट्रेसफुल. So a friend of mine suggested that I should have a GoFundMe account, which is like a crowdfunding thing, which I didn't agree to start off with because मुझे I don't know, I've never actually asked for money, and it was very difficult for me. Yeah. And she told me about it. I explored it. I want to talk about it today because I just a lot of people helped me through it, but I just want to tell you that the GoFundMe account started off, someone made it for me, um, a niece of mine, and then she activated it for me because it couldn't be made in Pakistan. I sat on it for a long time because I wasn't ready to ask for money. It's put out my story there. So I'm still very emotional about it. When it was live, then Umair, I'm sorry, I still get emotional about it. It came live, and a lot of people started supporting me with money, with good wishes, with calls, and it's. I just want to say it's not easy, and I'm just so grateful. But I also want to share that this is a source. When you run out of money, it's people have really come forward, and I got a lot of money, and I was just so shocked. So yes, I do want to share that. You raised about 14,000 pounds of your 15,000 target, but Yes, कितना बहुत मुश्किल है नादिया के लिए या किसी के लिए भी स्टेप फॉरवर्ड करना, अपनी कहानी ऐसे बयान करना, अपनी तस्वीरें लगाना और लोगों से फंड्स कलेक्ट करना. नादिया को मैं पर्सनली जानता हूँ एंड आई कैन टेल यू कि जी जिसको जी हम वेल बिल्कुल टू डू कहते हैं, प्रॉस्पेरस कहते हैं, सक्सेसफुल कहते हैं, नादिया उस क्राइटेरिया को बहुत ज्यादा एक्सीड करती है एज अ प्रोफेशनल, एज द टैलेंट दैट शी हैज, एंड येट शी हैड टू रीच आउट टू पीपल. बट इसमें बहुत बहादुरी चाहिए अपनी कहानियां सामने रखने के लिए, वल्नरेबिलिटी है. And so do support Nadia, not just Nadia, but anyone and everyone around you who is going through the same. And many of them, बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो कि शायद अपनी कहानी articulate भी ना कर सके जैसे नादिया ने की है. So Nadia, thank you for sharing this, for bringing this up, and I want to highlight this. This is on GoFundMe, नादिया की ये campaign. अभी वैसे target थोड़ा सा बाकी है जो initial committed था, but Nadia has gotten help from people. And that also talks about the जज्बा जो लोग show करते हैं when such a calamity hits. Thank you, Nadia, for sharing that. Would you like to add anything to this? I just wanted to say, Umair, that I was really overwhelmed because a lot of people started calling me
personally, asking me how they could support, sending me food, being there, because a lot of people really didn't know that sort of I was going through this again, because they thought, I've been through treatment and it's over and all of that. So the recurrence, but people really went, my colleagues, my ex-colleagues, I'd really like to, use this platform to thank them, who had, they had bigger networks than I had, and they spread the news and I got the money. ये पैसा सिर्फ 9 rounds को cover करेगा. So you can imagine that how expensive this treatment is. Just 9 rounds, which is 9 months of treatment. So that's what we figured out, that we can cover a little bit and we can ask people to help for a little bit. So it's very tough, as I said, emotionally, and financially and otherwise as well. And I got emotional because the thing is that, Umair, I worked very hard, and it's very hard to ask for money, and articulating your story, as you said, putting out your story and asking for money is not an easy thing for a person who's worked really hard all their life and is Yeah, self-dependent. So, it's but true. I would still say that don't be shy. That's what my story message to others would be, because it's humanly impossible to sort of pull together that amount. It's very expensive Yeah, medicine, so the resources that are there, maybe it's not common in Pakistan. I've realized that people in the West, even if they have a dream vacation they want to go on, they do this GoFundMe, and people come and help yeah, them. बिल्कुल। So एब्सोल्युटली क्राउड फंडिंग जो है वो बहुत critical illness यूजफुल टूल है, is और worth नादिया इनकरेज कर रही हैं exploring. कि अगर आप सपोर्ट चाह रहे हैं तो ना घबराएं, अपनी कहानी आगे डालें। आप इंसान हैं, आप नहीं पहुंच सक रहे, अपनी चैलेंज को नहीं मीट कर पा रहे, यकीनन ये वक्त है दूसरों से मदद लेने का, हेल्प लेने का, एंड यू वुड डू द सेम, यू वुड डू द सेम फॉर समबडी एल्स। सो बी अ ह्यूमन। जब इंसान अपने आप को इंसान समझता है तो वो मदद मांगने के लिए तैयार होता है। नादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपनी कहानी सुना रही हैं ऑफ फाइटिंग विद कैंसर। You were diagnosed, you fought through it a couple of years, and then relapsed. And the same challenge came again, and now you're at stage 4. I want to ask you this. I didn't put it on the discussion we had, but what is it like coming this close to death? What is it like coming close to not knowing the uncertainty of life, but so close? Umair, can you repeat the question? I didn't get it. Yeah, I'm saying, what's the experience of coming this close to death? कि आपने चले जाना है, आप इसके इतने करीब आ जाए, स्टेज 4 तक पहुंच जाए, दूसरी मर्तबा आपको यू रिलैप्स, तो क्या फीलिंग है जब आप एक तरफ प्लान चल रहा होता है कि जिंदगी है, आगे क्या करना है, बच्चों ने क्या करना है, बट हियर यू आर फेसिंग टर्मिनल इलनेस, यू फाइटिंग स्ट्रॉन्ग, अल्लाह आपको लंबी सेहत दे और आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आप करीब आई हैं मौत के, तो उस फीलिंग के बारे में बात करें प्लीज। मुश्किल, इट्स अ वेरी टफ फीलिंग टू गो थ्रू, इट्स स्ट्रेसफुल, लेकिन अभी जो मेरा रिजॉल्व है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं तो हर दिन को आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर डे आई गेट, दैट्स वन थिंग। जो भी दिन मिलता है मैं शुक्र करती हूँ कि चलो ये भी मिल गया, एंड सॉर्ट ऑफ ठीक है। एक तो वो कहते हैं ना, मौत बरहक है, वी हैव टू ऑल डाई वन डे, but the thing is that it is stressful, but I'm not letting it take my life over. Whatever life I have, I'd like to live it, properly. तो मुश्किल है, स्ट्रेसफुल है। एवरी टाइम आई मेक अ डिसीजन आई हैव इट एट द बैक ऑफ माई हेड कि, और मैं कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बोल देती हूँ बच्चों को। सो फॉर इंस्टेंस से आई से दैट इफ आई एम नॉट देयर फॉर योर ग्रेजुएशन, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। So it's not easy, but I'm not, I would say that my advice would be that someone going through this a similar situation, the life that you have, you should live it to the and be kind. And I'm more, I think I'm more sensitive to people. For instance, अब मुझे कोई बताता है कोई बीमार है, तो I take time out to reach out to them, to pray with them, to offer help, to listen to them. That's very important. To just let them steam off sometimes.
अपनी दिल की बात करने के लिए आप रीच आउट करते हैं किसी को सुनने के लिए, उसके लिए मैं पहले टाइम नहीं निकालती थी। आई वॉज ऑलवेज रश्ड प्रोफेशनली, हर वक्त ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। तो मैं it's not again like the battle itself, the journey, it wasn't easy. Living with this thing in your head is not easy again, but you have hope and you have faith, and you should live to each moment that you have. I try to live it to the best possible manner I can. मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि अच्छे तरीके से वक्त गुजरे। मुश्किल होती है, दिमाग में आता है, कभी कभी डाउन भी हो जाती हूँ, स्लीपलेस भी हो जाती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि पॉजिटिव। You're just such a strong woman you are, and how you're narrating your story, जैसे आप अपनी कहानी सुना रही है. May God give you more strength, and may your story inspire many others, give them strength too. Um, you commented about your body and looks changing, and then you also said that they don't matter, but they do. But they do for the billions in this world, for the influencers who are putting on the makeup, the hair products and the face products, and you have seen your body change, and you've seen it change drastically, and that too as a woman. I would like you to comment on that, please. I missed the question. Yes, I have. I miss them. I go out for chote hain abhi bhi. I get tears, but the thing is that some people advise me to put a scarf on. They don't understand the medicine that I'm taking makes me feel very hot as well. So अपनी challenges हैं, and I've learned to live on my own terms. मैं आपसे पूछा ठीक है, people stare at me, they can stare at me, it doesn't matter. They I tried for them to get used to the fact that um, I do remember someone coming up to me saying आपने इतने छोटे बाल क्यों रखे हुए हैं? तो some random person. So in while I was shopping, while I cured, the thing is that people don't have the sensitivity sometimes. But I told her, I said I'm a cancer patient. She was okay after that. But the thing is that it's uncommon for people. It's you do change, you put on weight. As I said, my arm is a different shape. I have problem buying clothes. I get tired very easily. Energy is an issue. I look different, but it's fine. It's okay. It's a part of life. I'm glad to be alive. I'm glad to be here with my kids, my family, my husband, my friends. So who all have been, really supportive. Um, um, very, very supportive. Can you hear me, Umair? Yeah, thank you. I can. थोड़ा सा बस lag था. I would like you, we're to, in the 50th minute, you do some amazing poetry. और आपने इस दरमियान भी एक किताब ऑलमोस्ट बना ली है, जैसे आप कह रही थी. कुछ हमें पढ़ के सुनाए. खास वक्तों पे आपने इसमें चीजें कही हैं, आपने कुछ मुझ शेयर भी की थी. आपकी जुबानी सुनते. जी बिल्कुल, मैं एक नज़म सुनाऊंगी जो कि जब मैंने डाली थी, a lot of people sort of wrote to me because वो सोच रहे थे, oh my god मैं इतनी डाउन हूँ. लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगी. It will give you a little bit of a glimpse of the what I was going through. So it's Sure. नज़म है. अपना साथ निभाऊं कैसे, खुद को बेयकीनी की आंधी में आस के दीप जलाऊं कैसे, धीरे धीरे मिटती सांस को तुम बोलो बचाऊं कैसे, लम्हा लम्हा डूबती धड़कन, दरिया पार से पाप बुने से, धुंध के बादल ढक गए अपने घर जाऊं कैसे. Okay. उमैर,
Can you hear जी, me? I can. आपकी बात बस मुकम्मल हो रही थी। Would you like me to um, repeat it? yes, if you can just आपके सामने जो डैशबोर्ड है ना, उसपे कैमरे का होगा, स्टॉप कर दें कैमरा, जी जी, मैं so नज़म that दोबारा आपकी सुनाऊं? आवाज नज़म सुनाए, लेकिन कैमरा स्टॉप कर दें ताकि हम आपको सिर्फ ऑडियो पे आपका जी डेटा जी, यूज आप हो, आई थिंक बेहतर होगा। कैमरा स्टॉप कर देना दिया पा, जस्ट प्रेस स्टॉप कैम, इट शुड बी राइट इन फ्रंट। अच्छा ठीक। बाकी बातें तो ऐसे सब कैमरा मैं बंद कर देती हूँ। तो जी कर दें बंद। ओके गुड, अब जरा बोलिएगा। Nadiapa, can you hear me? Okay, what I'm going to do is for this last part, I'm going to get Nadiapa on the phone ताकि उनकी आवाज हमें सही आ सके. Um, and we're going to remove her from the stream ताकि हम उनकी शायरी अच्छे तरीके से सुन सके. Um, I want you to pick up. जी, okay, आपको आवाज आ रही है मेरी सही? अच्छा चलिए, अब आप जरा इस पे बोलेंगी, मैं लोगों से पूछता हूँ आपको आवाज आ रही है तो आप कमेंट्स में प्लीज बताएंगे हमें. आई एम गोना ट्राई. ठीक है नादिया, आप प्लीज गो ऑन. थोड़ी सी अपनी शायरी जो आप सुना रही थी ताकि आप अच्छे से सुना सके. ठीक है, तो अपना साथ निभाऊं कैसे, खुद को मैं मनाऊं कैसे, ये दूध की धड़कन, दरिया पार में जाऊं कैसे, बरसों से जो ख्वाब बुने हैं उनको मैं दफनाऊं कैसे, धुंध के बादल छा रहे हैं, अपने घर में जाऊं कैसे. This is one of the pieces. This is one of the pieces that I during my chemo. Thank you for sharing this. Thank you for sharing this. I hope people could listen to this one. I wanted के poetry सही आ जाए, इसलिए मैंने आपको phone पे switch कराया है. Comments will let us know. Nadiapa, can you come back now so that we can do the closing? Just on the stream again. Thank you. Okay, so we should have Nadia Appa back here. Oh, okay, you were able to hear her. Wonderful. Okay, good. I hope you got. Yes, she is a Wonder Woman, super talented, genius person, no doubt about that. And may she stay blessed and wish her a long, healthy life. Lots of prayers for you, Nadia. I hope you can make it back before we close. Yes, she is going to be back here. Lots of prayers. Thank you, Ishan. Thank you, Shireen. Thank you, Fareha. Thank you, Tuba. Thank you, TGRS team. You've been working silently, not so silently in the quarantine. Great work. Thank you, Torx team. Thank you, Reeb. Thank you, Nadia Appa, for sharing that. It was beautiful. बहुत उसमें सवाल नजर आता है कि one is planned, but how to make it happen now? How do I do this? मैं कैसे करूँ ये? शुक्रिया आपका शेयर करने का. I'm so sorry. I wish the connection was better. I wish we were not this way. But this too was, I was throughout this, जब ये हो रहा था तो मैं frustration मेरे अंदर आ रही थी, लेकिन मैं कह रहा था कि patience, 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 patience. एंड स्मॉल थिंग्स कैन हमें हिला देता है, ऑफ कर देता है. और आप इतनी बड़ी जंग लड़ रही हैं और आप ऑफ नहीं है, आप अलाइंड है. मे गॉड ब्लेस यू. प्लीज लीव अस विद अ फ्यू वर्ड्स. यू दिस स्टोरी इज फैबुलस. कुछ अल्फाज आखिर में, और हमसे भी बताएं इफ वी कैन हेल्प इन एनी वे us for it, and also for others like you. What is it that people can do? Thank you, Umair. Thank you for having me. I hope I've been as honest as possible so that people can understand and sort of relate.
मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, people around you, before I had cancer, I didn't really understand what people go through. जो भी क्रिटिकल इलनेस लोगों को होती है, भले वो डिप्रेशन ही हो, प्लीज़ अपना टाइम निकालें लोगों के लिए। अभी क्वारंटीन है, अभी ये कोरोना, आपको पता चला है कि चीज़ों से ज़्यादा रिश्ते इम्पोर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, अपने इर्द-गिर्द लोगों के लिए अपने से बियॉन्ड सोचें। ये इतना ज़रूरी है कि अपने से बढ़कर सोचें। Other people, think of other people too. So that's my message. और दूसरा, मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि बी केयरफुल, ये वायरस खतरनाक है। पीपल जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है मेरी तरह, बहुत सारे लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं और बीमारियां भी हैं, उनका भी सोचें और प्लीज़ अपनी अपनी सेहत का सोचें। Stay protected, stay happy, stay blessed, and never give up. So that's my message for you all today, and thank you for everyone who's joined the live session. My love and my support. Thank you for supporting me and coming. And thanks, Thank Umair, to you. you. Thank you, Nadia. But thank you for always being wonderful, for being great support, and now more so, showing your courage to the world, fighting out cancer, relapsing, and yet not losing hope. There are dark days, there are difficult days, there are challenging phases, there are difficult phases. Somebody said it right. कि अल्लाह किसी को उसकी एबिलिटी से ज्यादा नहीं आजमाता, ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में, और इसमें ईमान होना आपको यकीनन बहुत बड़ा कर देता है, आपका दिल खोल देता है, आपका दिमाग खोल देता है कि nothing is bigger than you yourself. Your courage can beat anything. Nadia is one such story, and there are millions across the world who are living a very different life, a challenged life, a constrained life, a life that needs hours for treatment, hours to bounce back, lots and lots of money saved for the children put into treatment. May our attitudes change. May we find better remedies. May the disease go down, and may we be healthier. May we value the relationships and the real things that Nadia highlighted more than what we are valuing at this point. नादिया, आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत दे, आपको जिंदगी दे, और आपको इसी तरह जितनी जिंदगी है वो जिंदगी की तरह ही दे। बहुत सारे लोग जिंदगी गुजारते हैं लेकिन जिंदगी नहीं गुजारते। बहुत सारे लोग मर गए हैं लेकिन जिंदा है, कुछ जिंदा है, Thank you. मरे हुए हैं। You show life, and you have taught us life today with your story. थैंक यू। दिस वाज नादिया कमरान। थोड़ा सा हमारा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कनेक्शन का चैलेंज था। थैंक यू हुजैफा, कुदसिया, एहसान, फारिहा, FA, Reena, and all of you, Ehsan. Battling cancers, everybody has battles. Some battles are harder, some battles are tougher, some battles nobody is prepared for, like cancer, like corona, and such battles need for us to come together. आपका बहुत शुक्रिया। नादिया की कहानी पहुंचाए लोगों तक, नादिया की कैंपेन जरूर देखें, गो फंड मी पे सपोर्ट करें। और सिर्फ नादिया को नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मुश्किल है उनके लिए कहना कि दे नीड योर सपोर्ट, लेकिन आपका उनसे रिश्ता, आपका उनके पास जाना, उनके साथ वक्त गुजारना आपको यकीनन बता सकता है कि वो क्या सपोर्ट आपसे चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह घंटे के बाद ऑन द सीरीज अगेन। Stay safe, stay well, and be support. Be realize that आपका मेरा thumbs up, just that, just this can make somebody's day. You and I are more powerful than we think we are.